So Newton's third law, mg is action. According to the book, there is a reaction r. This is what SL Arora is saying. And we discussed with all the properties of Newton's third law, it is wrong. mg is action of earth. एक्शन अगर अर्थ ने किया है तो रिएक्शन अर्थ के ऊपर लगेगा, अर्थ के सेंटर पे. This r is actually we use to represent n for the normal reaction. Normal means it is always perpendicular to the contact surface. किसने लगाया ये सरफेस ने, so इतना ही फोर्स नीचे लगेगा सरफेस. These are action reaction pair, these are action reaction pair. Then we use some 4-5 points to prove that r and mg cannot be action reaction pair, क्योंकि कभी सेम बॉडी पे नहीं लिख सकते. Second, they have to be always equal. अभी तो इक्वल है जब तक ये रेस्ट पे रखा हुआ है, बट वी यूज द कॉन्सेप्ट, अगर ये लिफ्ट का सरफेस हो और लिफ्ट इज मूविंग अप, देन नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg. या ये ब्लॉक हवा में है कहीं, then there is mg but there is no normal reaction, so it should not happen. अगर वो एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं तो कभी है और कभी नहीं है. If there is action, there must be a reaction, right? ओके कुछ और ओरल कुछ और थ्योरेटिकल हमने डिस्कशन किया था. जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को बैकवर्ड पीछे की तरफ प्रेस करते हैं एट सर्टेन एंगल. ये कर लिए थे ना, किसी एंगल पे प्रेस करते हैं ताकि वन कंपोनेंट बैलेंसेस द वेट, अदर कंपोनेंट प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड मोशन. हीट जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे ही लगता है. फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम प्रेस कर रहे हैं that point is going backward or we are pressing backward, so हमारे पैर की टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने की. Okay, Newton's second law, first law, third law, we discussed a detailed discussion. कुछ important points. Now we saw momentum. Momentum क्या होता है? What is momentum? Mass into velocity. But होता क्या है, तो formula है इसका. What is the momentum? What is momentum? In a body. The quantity of motion. क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी. क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिटरमाइन करता है मोमेंटम. मोमेंटम से पता पड़ेगा उसका स्टेट कैसा. किसी भी बॉडी में मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोशन, ऋषभ? बाय Force. बाय अप्लाइंग फोर्स. अब बोलो. बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, सो सपोज द पूल टेबल, बिलियर्ड वाली जो बॉल, उसको हम स्टिक से हिट करते हैं. डू वी अप्लाई फोर्स? We apply force, right? But that force is only for a very small fraction of time. Understood? So this is not exactly force, that is something else. हमने कुछ jerk type दिया. Force तो है कि हम continuously उसको लेके जा रहे हैं, right? So that sudden change in momentum, body rest में थी, हमने उसको hit किया, it started moving. So that is a force acting for a very short period of time. It causes the change in momentum or change in a state of motion. That is called impulse. We provided a impulse. So impulse is another way of generating motion by applying a large force for a very small period of time, short period of time. Impulse से motion generate हो रहा है, यानी motion में कुछ momentum change हो रहा है. Impulse is also equal to change in momentum of the body. ठीक है, we'll prove it. लिखो impulse. Impulse, when a large force act for a short period of time, large force acts for a short period of time, it causes a sudden change in momentum. It causes a sudden change in momentum. It causes a sudden change in momentum called as impulse. Sudden change in momentum is called impulse. बॉडी रेस्ट में थी, वो चलने लगी या चल रही थी, रुक गई, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई,
all those are cases of the impulse. Impulse is change in momentum, and usually we denote it by symbol J. It is a vector quantity, so a body was in a state of rest and it started moving, or maybe it was moving with some speed and suddenly it starts, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या स्पीड बढ़ जाएगी. एनी सच केस, इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. Impulse given to a body or a system is always equal to change in its momentum, right? Impulse क्या हुआ? Any example of impulse, विवेक? वो तो मैंने बता दिया. बैट से बॉल को मारो. बैट से किसी बॉल को मारो, बिलियर्ड वाली बॉल को मारो, बेस बॉल को मारो, वो तो मैंने बता दिया. उसके अलावा एनी अदर एग्जांपल ऑफ इम्पल्स? एक्सीडेंट, कोलिजन. एक्सीडेंट इज एन इम्पल्स. हिटिंग अ पर्सन, थप्पड़ मारना इज इम्पल्स, राइट? हम जब नेल ठोकते हैं दीवार में, दैट इज एन इम्पल्स. वी अप्लाई ए हैमर, हम फोर्स लगाते हैं थोड़ी देर के लिए. अगर उसको ऐसे करोगे तो नहीं जाएगा. इफ यू आर टेकिंग ए हैमर और इसे कंटिन्यूअस लगा रहे हो, देन इट विल नॉट बी गोइंग इनसाइड बिकॉज इट इज नॉट एन इम्पल्स. या जब भी हिट करते हैं बैट बॉल क्रिकेट में, देन देयर इज अ वर्ड कमेंटेटर यूज, इसकी शॉट की टाइमिंग अच्छी नहीं थी, है ना? व्हाट डज दैट मीन? ज्यादा टाइम ले लिया इसमें बॉल को हिट करने में. द बॉल शुड बी हिट ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, कांटेक्ट होना चाहिए, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट? लेट प्ले कर दिया, अर्ली प्लेट समथिंग, कमेंट्री नहीं कर रहे. इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ. Force is equal to rate of change of linear momentum. F is dp by dt. dp is instantaneous, इतना भी छोटा नहीं, मतलब dt is how small? 0 only. dt means 0. Tends to 0, मतलब 0.0000, as small as possible. So अगर हम बोले कि this dp is the impulse, no, this is impractical. इतने छोटे टाइम में कोई चेंज ऑब्जर्व ही नहीं होगा. होगा बट ऑब्जर्व नहीं होगा. 0.00000001 सेकेंड, राइट? सो जब भी हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है, सपोज द बॉडी वाज इनिशियली मूविंग विद इम्पल्स p1, कुछ टाइम के बाद इम्पल्स हो गया p2, वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड. इनिशियल टाइम 0, आफ्टर टाइम t, दिस इज f dt. न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. विवेक, ये d बाई dt क्या है? नहीं, वो तो f लिखा हुआ है. d बाई dt का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है. तो आपको अलग से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. पुराने वाले बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे. पढ़ाया नहीं गया कभी 10 तक, हमारी गलती नहीं है, डोंट वरी. तुमने उसको बताया इंटीग्रेशन. ओके, दिस इज डिफरेंशिएशन. इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन और इंटीग्रेट ऑन बोथ दिस साइड. ऊपर रिलेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रिलेशन, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए और स्मॉल टाइम इंटरवल dt. फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, सो वी गेट dp का इंटीग्रेशन p, अप्लाई लिमिट p2 minus p1 is integration of 0 to t f dt, and p2 minus p1 is impulse. So impulse provided by any force is change in momentum, and that will be equal to integration of f dt. This is the actual formula. Actual formula मतलब जब भी कोलिजन होता है या जब भी कोई इम्पल्स होगा, देन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. जैसे हमने सपोज किसी बॉल को हिट किया बैट से, so when it is just touching the bat, force has started acting. जो इम्पल्स होता है, नहीं, jerk is different thing.
Jerk is different thing, impulse is different thing. अभी समझेंगे jerk और impulse में difference क्या है. Impulse is suppose this ball, so when the ball is just touching, started touching, तब ये force लगना start होगा. Before that there is no force. बॉल की कितनी भी कोई भी हार्ड बॉल हो, इट विल बी स्लाइटली कंप्रेस्ड, धीरे धीरे थोड़ी यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग. जब ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम, और फिर बॉल इससे दूर जाएगी, जैसे बॉल अटैच डिटैच हो जाएगी, द फोर्स विल बी जीरो. ऑल द इंपल्सिव फोर्सेस विल बी ऑफ दिस शेप. वो धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगा, फिर मैक्सिमम, और जब दूर जा रही होगी बॉल वापस तो फिर से कम होगा, और जैसे सेपरेट आउट हो गई फोर्स बिकम जीरो. इम्पल्सिव फोर्स विल नॉट बी कांस्टेंट, बट अगर हम उसको एवरेज एज्यूम कर लें इस पूरे ड्यूरेशन में जो एवरेज फोर्स लग रहा है, देन वी कैन आल्सो राइट दिस एज एवरेज फोर्स इनटू टाइम. जैसे डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम टेकन, बट हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहिए इंटीग्रेट करके. इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम. कब? जब कोई लार्ज फोर्स लगे थोड़ी देर के लिए. A large force acting for a short period of time, that will be called impulse. That will cause an impulse. Impulse is change in momentum. Integration ग्राफ में क्या represent करता है? Area under the curve. So since it is force versus time graph, the impulse given by this force can also be calculated by area under the force time graph. इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया, डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप. So if we integrate force versus with respect to time, this will also be equal to area under force versus time graph. Force और time का अगर ग्राफ है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, and that area will be equal to change in impulse. Change in impulse is, sorry, change in momentum is final momentum minus initial momentum, so that will be m into v minus u. V is final velocity, u is initial velocity. It is a vector relation again because impulse is a vector quantity. Impulse की unit वही होगी जो momentum की unit है, because it is change in momentum. Impulse is large force acting for a short period of time causing a sudden change in momentum. That change in momentum is defined as impulse. Force into time, अगर force को constant assume कर लें, otherwise integration of f dt if f is changing with time. Area under the graph, area under the force versus time graph is also defined as is also equal to impulse given. Correct? So impulse का मतलब force ज्यादा तब होगा when time is less for a sudden change in direction. अगर timing बहुत कम है तो जब ball को hit करते हैं, it should be for a very small fraction of time in contact. समझ गए? So ज्यादा जोर से hit नहीं करना पड़ेगा, just by the timing you can hit a 4. 6 नहीं, 6 के लिए 4 लगानी पड़ती. Okay. So impulse के कोई example other than these two जो हमने अभी any other example of impulse? अगर आप एक टर्म कंसीडर क्या लेते हो, अगर आप उसके अंदर ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अंटी वेलोसिटी से क्या को टच करते हो, उसका ऑप्शन होता है. अगर किसी को कम टाइम ड्यूरेशन में जोड़ने की जरूरत है, इसको सर पियानो में अगर आप ई को कम ड्यूरेशन के लिए मतलब कम टाइम ड्यूरेशन के लिए करो तो ज्यादा साउंड आती है एज कंपेयर्ड टू स्लो टच. राइट. और दूसरे प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मोमेंटम, कोई बॉडी मूव करी, बॉल मूव करी, हैव टू कैच इट. सो हम क्या कर रहे हैं, उसके मोमेंटम v से 0 कर रहे हैं. बॉल इज मूविंग एंड इफ यू आर कैचिंग द बॉल, इसकी वेलोसिटी v है एंड नाउ यू आर मेकिंग इट टू बी 0. It becomes 0. Initially v and now it becomes 0. So it is a change in momentum. That change in momentum is equal to impulse. Impulse is force into time. अगर आपने उसको पकड़ के instantly रोक लिया, time is less, then force applied will be more. तो आपको ज्यादा लगेगी.
तो इसलिए हम पहले कैच करते हैं तो पीछे थोड़ा हाथ धीरे धीरे ले जाते हैं सो दैट टाइम ज्यादा हो, फोर्स कम होगा, सो दैट यू विल नॉट गेट हर्ट। ठीक है, ऐसे ही बस से कूदती चलती बस से अगर कूदते हैं तो वी शुड कीप ऑन रनिंग सो दैट आपके जो मोमेंटम पहले था उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड व्हेन देयर इज अ टाइम टेकन, क्योंकि इम्पल्स तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कुछ वेलोसिटी है बाद में जीरो होनी है, mv माइनस जीरो, इम्पल्स इज फिक्स, राइट। सो इस इम्पल्स का इफेक्ट हमारे ऊपर कितना पड़ेगा उसके लिए वी हैव टू इंक्रीज द टाइम। जैसे पोल वॉल्ट जंप या हाई जंप या लॉन्ग जंप वो किस में करते हैं, नीचे सैंड में या कुछ फोम फोम लगा के, सो दैट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट शुड बी इंक्रीज्ड, force of impact should be less, right? Okay, so ये लिखने की I think जरूरत नहीं है। Cricket player lowers his hand while catching a ball. A person falling from certain height receives more injury if he falls on a cemented floor than when he falls on a heap of sand. Sand पे चोट नहीं लगती because उसको टाइम मिल जाता है मोमेंटम एब्जॉर्ब करने के लिए, right? Okay. Automobiles are provided with shockers. Shockers? ताकि जो टाइम इम्पैक्ट है वो बढ़ जाए, वो नीचे जाए ऊपर आए, उसमें टाइम लगेगा तो हाँ, फोर्स कम लगेगा आपके ऊपर। टेनिस रैकेट में शॉकर लगे होते हैं। टेनिस रैकेट के शॉकर का पतला सनक होता है, वो तब होता है ताकि स्प्रिंग ज्यादा पीछे रह जाए। राइट राइट राइट, ओके ठीक है। फुटबॉल नेट, हाँ गोल पोस्ट का नेट, ओके दैट इज आल्सो एब्जॉर्बिंग द इम्पल्स बिकॉज वो लूज होता है, अगर वो टाइट होगा तो बढ़ जाएगा। Buffers are provided between the bogies of train. ट्रेन की बोगीज के बीच में कुछ स्पेस रखते हैं और वो दो रॉड जैसे निकले रहते हैं सो दैट जैसे आगे वाले ने ब्रेक लगाया तो पीछे वाले को उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी रिड्यूस्ड। China wares are packed in straw paper before packing. समझ नहीं आया, जो कप आते हैं चाइना क्ले वाले ग्लास के कप, उनको पेपर स्ट्रॉ में रैप करके और फिर पैक करते हैं ताकि थोड़े बहुत भी जंप पंप हो जब भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सो इट शुड नॉट ब्रेक। ओके, वो बबल वाले जो रैप आते हैं उसका भी सेम पर्पस है। ये पुरानी बुक है तब तक बबल रैप शायद नहीं बने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस impulses। अच्छा, अब अभी एक और बात हमें करनी थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन impulse एंड jerk। impulse is change in velocity, बॉल गई वापस आ गई with the same speed but velocity has changed, that is called impulse। jerk क्या होता है, change in acceleration, change in direction of acceleration, पहले आगे एक्सीलरेट हो रही थी, now it is accelerated backward। jerk is change in acceleration, it was accelerating positively and suddenly back, that is jerk। जैसे वो yo-yo, that is jerk, that is not a impulse। Impulse is a ball hitting and going, changing its velocity only, and jerk is a force or acceleration changing suddenly। फॉरवर्ड में जा रहे थे, सडनली जर्क मिल गया, वापस एक्सेलरेट होने लग गया। सो मैथमेटिकल टर्म इज dA by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ acceleration with time, that is called jerk। If there is acceleration changing with time, means body is suffering a jerk। If only velocity is changing, that is called change in momentum or impulse। Understood? Okay। Impulse, so कुछ छोटे मोटे questions कर लेते हैं on the basis of impulse।
A ball of mass 2 kg is released from (80 meter height or dropped from 80 meter height on a horizontal bat and it bounces bounces 120 meters. ज़्यादा हो गया ना? 80 meter 120 meter is little impractical. छोटा कर देते हैं. It is coming from, let's say, 20 meters, and on being hit it goes to 80 meters. 20 मीटर से बॉल को नीचे गिर रही थी, नीचे से बैट से किसी ने हिट किया, it goes up to 80 meters. If the person can hit with maximum force of 200 Newton, find the time of collision with the bat or time of contact with the bat. कितनी देर तक वो बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में रहती है? If it is drop time of contact with bat. ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप किया from certain height, when it is coming नीचे से हिट किया and it is going above the actual height. 20 meters से drop थी and it is bouncing back up to 80 meters. U is equal to 0. A person hit with a horizontal bat. So it was dropped from 20 meter height and now it goes to a height of 80 meters. What is the average force that the person can? A person can hit with average force of 200 Newton. Find the time of impact. कितनी देर तक वो बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में थी? So it is a case of impulse. बॉल नीचे आ रही थी. It is coming with suppose velocity v1. Just before hitting the bat, it acquires velocity v1 because of gravity. बैट से हिट करने के बाद it bounces back with certain velocity v2. और ये v2 इतना है that the ball is going up to 80 मीटर, यानी ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाके फिर से वो रेस्ट पे आ जाएगा. v is equal to 0. Here it was dropped from initial position. Initial position पे velocity 0 थी, a to b, and when it bounces back after being hit, right? So यहाँ पर इसने कुछ फोर्स लगाया and we have to find वो फोर्स कितनी देर तक लगता है, कितनी देर तक ये बॉल कांटेक्ट में रहती है. There is some average force applied by the person. Impulse is change in momentum. Change in momentum is force into time. अगर average constant force apply कर लेते हैं तो according to the impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem मैंने अलग से नहीं लिखा है, वो साथ ही प्रूव कर लिया था. Impulse given by a force is always equal to change in momentum. Impulse momentum theorem says that the total impulse given is always equal to change in momentum
change in momentum is final velocity minus initial velocity. So पहले हमें initial velocity निकालनी पड़ेगी, final velocity निकालनी पड़ेगी by using the third equation. V square is U square plus 2G H1. H1 is 20, G को 10 ले लेंगे. तो V1 तो 20 आ गया. 20 meter per second was the speed before hitting the bat. After hitting the bat, वो कितने velocity से ऊपर गया? We use third equation. V square is U square minus 2GH. Final zero, initial is V2 minus 2 into 10 into 80. कितना है? 40? 40. It hits with 20 and bounces back with 40. सर मैंने मेथड के नंबर नहीं होते. ये मेथड गलत हो गया यहाँ पे. सर मैंने ये तो पहले आई, ये एक मोशन है, खत्म हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं इससे. नाउ इट इज हेड बैक. 20 मीटर से तो ये आई थी ग्राउंड ग्रेविटी की वजह से. फिर पर्सन ने दम लगाई एंड ही हिट इट बैक. सो ही गिव अनदर वेलोसिटी व्हिच इज v2. क्या मतलब हमें यू को सर वो नहीं लेना था जैसे 20 नहीं लेना, वो तो खत्म हो गया. डाउनवर्ड मोशन था, खत्म. फिर हिट किया, बॉल ऊपर, डायरेक्शन चेंज हो गई. तो वेलोसिटी इज v2. करो सॉल्व आगे, शकल देख रहे यार. बता दिया मैंने करना क्या है. इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. उसके बाद फॉर्मूला लगाना है. मास 2 kg दिया हुआ है, इंटू v माइनस यू कर देंगे और ये आ गया फोर्स इनटू टाइम. यस राधिका, व्हाट्स द आंसर? 40. 40 व्हाट? हमें टाइम निकालना है. 40 आ रहा है. Sir, 5/3. 7.5. 40 आ रहा है. This is possible. ओके लेट्स सी, मे बी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा. 0.5. 200 इंटू डेल्टा टी. 200 का फोर्स है, मास कितना है? 2 kg. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 40. What is the initial velocity? Heath, what is the initial velocity? What is the initial velocity? You calculate कर लिया हमने. 20. Ishan? 20. It's a velocity. Velocity is a vector quantity. अगर आपने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले को लेंगे नेगेटिव. इट इज नॉट 20, it is -20. It's a velocity. Velocity is a vector quantity. If upward is taken positive तो downward negative होगी. अगर downward को positive ले रहे हैं तो upward negative होगी. There is a direction involved. It will become 2 into 60 delta t divided by 20. So how much is this? 0.6. 0.6 सेकेंड के लिए वो बॉल कांटेक्ट में रहेगी बैट के. इफ इट रिमेन्स इन कांटेक्ट फॉर 0.6 सेकेंड, it will go up to, person can hit up to 80 meter. Velocity is vector और vector में direction भी involved है. So if it is in opposite direction, we will use with the proper sign. V1 is minus. क्यों? वो कहाँ से आया? मास. Okay. Impulse is change in momentum. Another question.
तो हम हर एक तरह के फॉर्मूले पे के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अक्सर ये गलती होती है, डायरेक्शन भूल जाते हैं। सो ड्यूरिंग एनी कोलिजन इफ देयर इज अ डायरेक्शन चेंज इन्वॉल्व, डायरेक्शन चेंज में हम साइन भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी का आया था 0.6? एनीवन गॉट द सेम आंसर? अरे एक बार मेरे सामने सही कर चुके हो क्या? सही कर क्या है? मेरे करने के बाद आया ना तुम्हारा, मैं पहले पूछ रहा हूँ, उसके बाद तो सभी का आ गया है। कि पहले सबसे पहले आंसर आया तुम्हारा 40, उसके बाद आंसर आया कुछ 1/5, फिर मैंने 400 भी बोला बीच में, जो भी गलती हुई ना। आस्किंग बिफोर आई सॉल्व, किसी का आंसर आया था 0.6? नहीं, ये गलती सब नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the position time graph of a particle of mass, if the position time graph of a particle of mass, Mr. विवेक कुछ आ रहा है कितना? तुम्हें पुराने वीडियोस एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम दिन में टाइम निकाल के आओ। कल फ्री हो? कहाँ बिजी हो? हैं? स्कूल का काम यहीं आगे करो, जब खत्म हो जाए तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। क्या बेटा? ग्राफ ऑफ पोजीशन, क्या बोला था मैंने? इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल of mass 10 kg is as shown. X is position, t is time. Calculate the impulse provided at t is equal to 2 seconds. If the position time graph of a particle of mass 10 kg is as shown, calculate the impulse given at t is equal to 2 seconds. Calculate impulse given at time t is equal to 2 seconds. इम्पल्स का कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? कौन सा? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम नहीं है ना ग्राफ, ग्राफ तो देखो किसका है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर फोर्स टाइम ग्राफ होता तो एरिया निकालते, खटाक से खत्म इम्पल्स। और ये इम्पल्स किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, एट टाइम t is equal to 2. Yes, anyone, what should we do? कैसे कैलकुलेट करेंगे इम्पल्स? इम्पल्स t is equal to 2 सेकंड पे लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, कैसे पता? फ्रॉम द ग्राफ इज इट क्लियर दैट सर पहले वेलोसिटी निकालेंगे। पहले वेलोसिटी निकालेंगे, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट ग्राफ पता है, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? ग्राफ के रियल से u 0 लेंगे। सर स्लोप निकाल लेंगे मतलब। यस, डेल्टा t डेल्टा टी नहीं दिया हुआ, टी दिया हुआ, टी इज इक्वल टू 2 पे एक इंस्टेंट पे। स्लोप निकाल लेंगे, वेरी गुड। हम स्लोप किस पे निकालेंगे? टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के जस्ट पहले और जस्ट बाद। टी इज इक्वल टू 2 से पहले there's another slope, just after t 2 second it is on the another slope line. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बोला ना तुमने? ये उधर से भी आवाज आ रही है ना, तो 3D साउंड आ रहा है। Velocity, right? So we will find the velocity, initial velocity or velocity just before t is equal to 2 seconds. .99 समथिंग। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज अ सडन चेंज
2 से पहले वो किसी और पाथ पे था and right after t is equal to 2 it is going in another path. So velocity at time t is equal to 2. This will be the slope of line AB is equal to slope of line AB. Initial velocity, similarly we'll find final velocity, velocity just after t is equal to 2 seconds. This will be slope of line BC. And then impulse will be mass into change in velocity, because impulse is change in momentum, mass into change in velocity. What is the initial velocity? Initial slope कितनी है? ईशान समझ आ रहा है? पक्का? ये ग्राफ वाला पार्ट पढ़ा नहीं था शायद पहले यहाँ, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, याद है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन टाइम का स्लोप क्या बताता है? अभी क्या? जर्क नॉट इम्पल्स. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है जर्क, dA by dt. Okay. So what is the initial slope? Tan theta is slope, so it is 20 by 2, which is 10. What is the slope of line BC? Minus. ये गलती करते हो. What is the slope of line BC? 30 meter per second. 20. 20. मैंने इधर छोटा कर दिया, पहले बनाया था 4 तक. Now it is only 2 to 3. So base is only 1. 21 है भाई. Perpendicular is 20, base is 1. हाँ तो minus 20 बोला था. Minus 20. Initially 10, final minus 20. Mass is 10 kg. Final velocity minus 20. Initial velocity is 10. That become minus 300. What is the unit of impulse? Newton second. Meter per Force into time. second. Yes, or Newton into second. Force into time. Minus 10. That's impulse. So position time का ग्राफ given है तो उसका एरिया मत निकाल देना, because that's not the impulse. ग्राफ देखा बिना सोचे समझे एरिया नो. Next. If acceleration time graph of a particle is as shown. Acceleration time graph of a particle of mass 2 kg is as shown in the graph. Calculate the impulse given. Calculate the impulse given in a time of 6 seconds. In a time of 8 seconds. Acceleration time graph से क्या कैलकुलेट करेंगे? What is the Velocity. area? Area under acceleration time graph gives Change in velocity. change in velocity. Change in velocity. So इसका area निकालेंगे, उससे change in velocity मिल जाएगी.
और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इम्पल्स. Impulse is change in momentum, that is m into v minus u. कितना आंसर? एरिया निकालो इसका. देख के नहीं निकलेगा, पेन चलाना पड़ेगा. गाने सुना रहे हैं. हाँ, एरिया ऑफ पहले एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर ट्रेपेजियम है, फिर there is a triangle. Calculate the area. That area will be changed into area 150 or final answer. Okay. Mass कितना था? 10. 2 kg. Mass is 2 kg. Area of this half into base into height, so that's 10. Area is 10 into 2 plus 20. Area of the trapezium is half into sum of parallel sides, so half into 30, that's 15. Area of this triangle is half into 3 into 30. 150. 150 Newton second is the अगर ये फोर्स टाइम ग्राफ होता तो सीधे एरिया निकाल लेते, फिर मास से मल्टीप्लाई कर लेते. एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिवीजन ग्राफ क्या देता है? वो x v square minus u square by 2. आंसर्स v square minus u square by 2. तो कुछ नहीं देता. तो उसका कुछ dx स्क्वायर d स्क्वायर x v dv by dx था ये. सर d स्क्वायर x करके कुछ तो एक्सलेशन लिखो, लिखते हैं. एक्सलेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d square x by dt. तो ये d स्क्वायर माइनस u स्क्वायर square minus u square. एरिया अंडर a वर्सेस x. एरिया जब भी करते हैं y dx. एक्सलेशन का फॉर्मूला था v dv by dx into dx 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 1. इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर by 2. एक्सलेशन पोजीशन का एरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the force acting on a particle, if the force acting on a particle at time t is given as, if the force acting on a particle at time t is given as F is equal to 2t minus 1 I cap plus 3t square j cap. Calculate the impulse. Calculate the impulse given by the force in first 2 seconds. Calculate the impulse given by the force in first 2 seconds. समझ आ रहा है? Heath? Getting it? Okay. सो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इंटीग्रेशन कर लेंगे, बाकी कोई इसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं है. इम्पल्सेस
इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, बिकॉज इट इज वेरिएबल, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वे इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t. सो जब भी दो कंपोनेंट होंगे हम दोनों का अलग, 2t minus 1 dt, दिस विल बी I cap, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 plus 3t square dt, integration from 0 to 2, that is the impulse. Yes, integration याद है? इंटीग्रेशन याद है? इंटीग्रेशन पूछते हैं तो बोलते हैं इंटीग्रेशन याद है, डिफरेंशिएशन भूल गए। तो हमें एक इंस्टेंट में फोर्स मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, हमें तो सारा निकालना है। नहीं, इंटीग्रेशन इज नॉट दैट, इंटीग्रेशन इज ऑल द वैल्यू समेशन, 0 पे 0.1 पे, अब 0.1 के बीच में भी 0.001 भी है, so it is not possible to write and add. इंटीग्रेशन 2t minus 1 का, अरे पूरा इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? x to the power n को जब इंटीग्रेट करते हैं, इट बिकम x to the power n plus 1 divided by n plus 1. ईशान, ईशान बंसल, यस सर। होना मैदान में, आज आए नहीं ऑफलाइन? व्हाट इज दी, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कहीं से भी करूं, दैट्स द एडवांटेज। हाँ, 2t minus 1 का इंटीग्रेशन, x to the power n का इंटीग्रेशन n plus 1 upon n plus 1। अंशिका, इंटीग्रेशन पता है? इसमें 2 is taken outside, integration of t minus integration of dt times I cap. इसमें पावर कितनी है? t raised to power, अंशिका t की पावर कितनी है? 1। x to the power n हो तो उसका इंटीग्रेशन होके हो जाता है n plus 1 divided by n plus 1. So likewise here, t to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1. ठीक है? dt का इंटीग्रेशन t, so this is the first term integration, 2t square by 2, इसको हम लिमिट पुट कर लेंगे from 0 to 2. राइट, सेकेंड टर्म में ऐसे ही 3 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। मिस्टर विवेक, इस फॉर्मूले में n कितना है? कंपेयर करोगे अगर 2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, अगर 2 है तो ये हो जाएगा 2 plus 1 divided by 2 plus 1, so t power 2 plus 1 t cube divided by 2 plus 1। नहीं विवेक, यस सर नहीं बोलना है भाई, आंसर बोलना है, यस सर नहीं बोलना है। 2 2 gone, 3 3 gone, this become t square minus t I cap, इसका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 2 plus t cube, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 2 j cap। लिमिट का मतलब अपर लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे, सो पुट t is equal to 2, 4 minus 2 that become 2, 0 पुट करोगे तो 0, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, प्लस 0 to 2, 2 की वैल्यू पुट करोगे तो 8 minus 0, so 2 I cap plus j cap, that is the impulse given by this force till t is equal to 2 second. 0 से 2 सेकंड के बीच में impulse given is 2i plus 8j. Magnitude wise root 4 plus 64, which is root 68 Newton into second. Impulse given by the force. Right? इंटीग्रेशन की एक क्लास, एक नहीं मैंने 3-4 क्लासेस की है जो आपको YouTube के चैनल पे या ऐप पे मिले। So on a priority basis you have to see
डिफरेंशिएशन 2 पे है बट ओपन पब्लिक नहीं है, वो आपको तभी मिलेगा जब मैम से बोलोगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये कुछ मैथ्स की कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ रखे हैं जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। यस, ओके, होपफुली थोड़ा कुछ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसको अच्छे से घोट लो एकदम 3-4 बार, लर्न इट। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन में ये और या फिर कोफिशिएंट हो, इसमें कोफिशिएंट हो तो उसे डिवाइड कर देते हैं। ये याद नहीं आता? देखूंगा सर यहाँ कोई बात नहीं, देख लेना, नहीं तो जब भी जरूरत पड़ती है मैं ऐसे रिवाइज कराता रहता हूँ। तो कैलकुलेशन है यार, अपने आप क्या करो। ठीक है, सो इम्पल्स की एक छोटी सी एक्सरसाइज है एसएल में ऑन पेज नंबर 5.14, दैट इज इन होमवर्क, और हम इम्पल्स को और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो इम्पल्स का कुछ ओरल डिस्कशन। इम्पल्स जब हम किसी को अप्लाई करते हैं उतना ही हमारे ऊपर भी लगता है, लाइक थप्पड़ मारते हैं, we provided the impulse, equal and opposite impulse। इकलौता इम्पल्स कभी नहीं होगा, जैसे एक सिंगल फोर्स नहीं होता वैसे सिंगल इम्पल्स नहीं होगा। कॉमन सेंस, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, इसका रिएक्शन भी तो होगा जिसने भी लगाया। इम्पल्स विल ऑलवेज बी इम्पार्टेड टू टू, दीवार को हिट किया वॉल पे, उतना ही हमारे ऊपर। जब दोनों का इम्पल्स ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज विल बी 0। व्हाई? बिकॉज जितना ये फोर्स है, रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, F dt and minus F dt, the summation will always be 0. In any system कभी भी हम इम्पल्स नहीं देते, और उसी को बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 विल ऑलवेज बी 0। एक ने इम्पल्स दिया है, दूसरे को उतना ही मिला है, ओवरऑल विल ऑलवेज बी 0, which gives rise to another concept called as conservation of linear momentum. राइट, मोमेंटम पढ़ लिया हमने। मोमेंटम को चेंज करने का तरीका, या तो फोर्स कॉन्टिन्यूसली लगाओ या एक बार में ज्यादा फोर्स लगाओ, दैट्स इम्पल्स। इम्पल्स विल बी आल्सो प्रोवाइडिंग द मोशन, प्रोड्यूसिंग द मोशन, एंड फोर्स विल आल्सो प्रोड्यूस द मोशन। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 5.14 फ्रॉम द एसएल इज इन होमवर्क। ठीक है, सो संडे को टेस्ट है मोशन प्लेन का, स्पीड लैब्स की वेबसाइट पे है, दैट इज नॉट ऑन द ऐप। यूज द वेब पोर्टल, एंड जिनको एक्सेस नहीं है, जिनका अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगी, जिनका नहीं है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनके लिए पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, बट यू हैव टू सॉल्व इट एंड सबमिट इट बैक ऑल द रफ वर्क। ओके, थैंक यू।